start, first I will share my screen so that all it will be visible to everybody. Okay, it is visible now. Now we have already started in previous session. That is text format CSS. That is text formatting CSS, and we have completed in the previous session your what do you call as a your font rules and your font properties. So just a simple glance of what we have covered in previous session. We'll have a small revision, and then today itself we'll be winding up with your text formatting CSS. So in this, we have already covered different types of properties as far as font was concerned. That was the property name as color, then font family, font size, source we have covered at the end, font variant, font stretch, font style, font weight, and last one Unicode reach. So this we have covered. And apart from this, we have already talked about the different font formats which are available in market. That is TTF format or OTF format, WOFF format, WOFF second version, that is 2.0 format, and SPG fonts. So we have covered up till now as far as this the last one, that is EOT, that is embedded open type of formats we have covered. And in that day, we have entered into the new type of properties that we call it as a text effect properties. And into this text effect properties, basically we need to know what all types of properties which are there in this text effect property. So just like font, there is again a color property. You can use it in formatting a text. Direction properties we have covered in the previous session. Letter spacing and word spacing, this are also being covered in the previous session. And in today's session, we will be talking about the text indent property, text align property, text decoration, text transform, white space, and text shadow. So in all, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So 6 properties will be covered in today's session, and today itself will be closing with the text formatting properties. Is it clear to everybody? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now we have seen example that how we have given the color properties in the RGB format. That is, you can give a color directly also. You can give with hexadecimal also, and the same way we can give with the RGB combination of 3 parameters up from 0 to 244. Same way we have seen in a previous session, that is a direction property. And this direction property with 2 values, that is LTR, that is left transition, and RTL, that is right transition, used with direction colon RTL or colon LTR for moving a text towards the left alignment or right alignment. We have already seen an example of this. Same way, in previous session we have already seen that letter spacing and word spacing. If you want to give a space between the letters, that is individual character, you can give it with letter spacing colon pixels, and by default it is normal. So but you can give it normal values also, that is value as normal. So it will be catching the properties of your browser. So whatever settings the browser contains, that will be set. And if you give some pixels value, that is 5 pixel or 10 pixel, the spacing will be increasing. So the minimum the pixel size, the minimum is the spacing between the letter. Same way we have seen the word also, we can have a space between the different words also. Just here the space is residing between the two words, that is possible and value. So we have a space between this, and this word spacing is been required to give a space between that. And again, as far as the properties are concerned, you can give a normal values, that is normal keyword can be used, and you can set what you call as a customized values in pixels also. So here in this example, we have covered word spacing colon 5 pixels. So 5 pixel width was given between the two words. And up till now, we have covered these 4 properties as far as the text formatting is concerned. I think we have refreshed the content what we have covered in the previous session.
Shall we move further for the six upcoming properties that we need to understand in more detail? I want a reply from your side. Yes. Yes or no? Shall we move further now? Yes, sir. Rest. Akshay has said yes. What about rest? You can ping a message also, no issue. I am watching your messages also. मी तुमचे मेसेज देखील पाहतो. ज्यांना बोलायला लाज वाटत असेल तर त्यांनी मेसेज करा. येस, जोपर्यंत तुम्ही म्हणत नाही तोपर्यंत मी पुढे जाणार नाही. Yes, sir. अश्विनी येस म्हणते, बाकीचे रेस्ट ओके. Yes, sir. बाकी की हा नाही कुछ. Yes, sir. Yes, sir. ओके, आहे जागे आहेत. Okay. Now the text indent property, this is one of the property where we can use for giving some space at the paragraph. जैसे हम यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिख रहे हैं, मेरे को एग्जांपल दिखा रहा हूँ टेक्स्ट कंटेंट में. देखो यहाँ पर जैसे हमें कुछ पैराग्राफ लिख रहे और देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन द पैराग्राफ. सो इसको हम पैराग्राफ कब बोलेंगे, जब हम इसके बीच में थोड़ा स्पेस आ जाएगा. ओके, जैसे फॉन्ट CSS फॉन्ट के बारे में हमें कुछ लिखना है तो यहाँ में कुछ स्पेसिंग रखना है स्टार्ट में और उसके बाद पैराग्राफ को स्टार्ट करना है. द थिंग इज कॉल्ड एन व्हाट वी कॉल एज एन इंडेंट, टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी. So text indent is nothing but giving an indent, and how it is been set, it's very simple. You can set it by using the value in percentage also. Okay, so it can be set in centimeters also, it can be set in pixels also. So it is better preferred to go for spacing in centimeters. So if I want to give this paragraph some indent, so that automatically the space will be occupied, and that space will be 1 centimeter. So I am using a centimeter parameter over here. So indent will be applied. So we'll move for executing this in a demonstration, and how this paragraph will be given an indent, we'll check it in an assignment. So I'm closing this part, this view, and we'll move for writing the CSS. One second, my system is a little bit slow. Okay, so I have copied the content and we'll go for explanation into your notepad. So already the 3 assignments we have covered on the same parameter, that is a direction or your word spacing and letter spacing. See this, we have already covered. Now file, new, and I paste over here and save it as assignment, Control S. And I catch some paragraph from here. So ये कुछ पैराग्राफ में कॉपी करता हूँ like this. Paste over here. So this is AS4.html, and I just paste some content over here. So I've pasted a lot many things over here, and you will see I've set that text indent for this paragraph. I've set a property called as a text indent as 1 centimeter, and I have given a semicolon over here, and I save this file, and now I go for running this file on a Chrome. So see, the space is occupied yet at the start point. So space has occupied. I'll go for one more thing, that is write something over here, H1, and I close this with /H1. I will say parag, so it is a font properties. Okay, so I put like this, and I catch it in my assignment, refresh it. So see, the indent has make it like this. So 1 pixel. You can give it in pixels also, no issue. अगर मुझे यहाँ पर चाहिए, I will say 20 pixel. Let us see what I will be the output. And I go here and refresh it. So 20 pixel size is occupied. Nothing will be there in this section. If I make it 120 pixels, so you don't need to write a ampersand MBSP.
तो ये अगर इतना स्पेस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, एम्परसन एनबीएसपी, तभी जाके हम उसके अंदर कुछ लिख सकते हैं। जैसे ये पैराग्राफ को मैं कॉपी करता हूँ एंड इसको सभी को मैं कॉपी करता हूँ, एंड आई डोंट वांट टू यूज दिस प्रॉपर्टी नाउ। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज दैट, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता है एम्परसन एनबीएसपी सेमीकोलन। ओके, और ये कितने बार लिखना पड़ता है, जितने बार मुझे स्पेस देना है। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 बार लिखता हूँ, एंड आई पुट ओवर हियर एंड यू सी द स्पेस विल बी ऑक्युपाइड। और यहाँ पर मैं देखो, व्हेन आई सिलेक्ट इट, इट विल लुक इन ब्लू कलर, बट यहाँ पर देयर इज नो वे, यू कैन नॉट ऐड समथिंग। मैंने इसको बटन क्लिक करके मैंने इसको ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पर नहीं हो रहा। तो मैं जैसे देखो यहाँ से मैं प्रॉपर्टी को फॉन्ट को कॉपी कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली द व्हाइट स्पेस विल बी ऑक्युपाइड। Okay, and same way when I copy like this, you will see the space, there is the space in between this paragraph. So ampersand NBSP will be allocating space over here, whereas when I use text indent property, nothing will be occupied. It is just moving a paragraph ahead. This is the basic difference between the two. And here what we have to do is that it is unnecessary, we have to give this spaces, हमें इसको बहुत बार पेस्ट करना पड़ता है, तब जाके ये स्पेस आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देना चालू हो जाएगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सी स्पेस देने के लिए मुझे एम्परसेंड एनबीएसपी लिखना पड़ता है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? So how this text indent property will be helping us to give some space for your paragraph, and it will be helping us to write something on your in a paragraph and indenting the paragraph just like it is just a paragraph. Yes, is it clear to everybody? And you can give it in this pixels also, and you can give it in centimeters also. So 1 centimeter I can put like this also, no issue. It will be accepting the values also. So just like this, 1 centimeter space is occupied. That's it. Is it clear to everybody? This is called as a text indent. Yes, sir. Okay. So I move for another property, that is text indent we have covered. Now text align. Now this is one is most important, because you see this alignment that is left or right here in the Word document, you see that is a left or a center. So the tool pick will show you the property. So it is center, it is left, align left, right, and here it is justified. So these 4 things, that is left, center, right, and justify, is nothing but it will be occupying the whole space. Okay. Same way, it has left, it has right, it has center, it has justify. So this tooltip, this tool which is there in a Word document or any other document, you can use this in your documentation also. And the property that will be helping us to justify is nothing but your text align property. So text align with 4 parameters, that is left, right, center, and justify, will be helping us to write okay. So I'm copying the code and I will be pasting this code into another file, that is file new, and I'm paste over here and save it as an assignment5.html. Okay. And this is right align, this is center align, this is left align, and one more thing I want to specify, that is justify. So justify. So all 4 things are there. And what I'll do is that I will copy this paragraph. तो ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ. So this paragraphs will be there. So you will find this differences between the same content, same paragraph. So these are the 4 paragraphs. We have written something into this paragraph. The style sheet we have applied over here, that is text align, right, center, left, and justify. So the all 4 values for the corresponding properties we have used. And when I move for executing this, one second, I am moving for executing this, saving this, and running it on a Chrome. You will see this is what? This is the first paragraph. And you will see it is right aligned. So everything will be aligned towards the right. This is nothing but your center align. So I just minimize the content like this. And you will see it in the properties like this.
So you will see this is left aligned. So the left section is first covered and then it is moving the text towards the right. It is right aligned. So right part will be covered and the left part will be remain. So we'll find that empty spaces on the left hand side because it is right aligned. Same way it is center aligned. The text will be occupying the center part. So there will be spaces on left hand side also and there will be spaces on right hand side also. Then third one is the left aligned. Probably you will see there is a space on right hand sides and no spaces on left hand sides. And last one, that is justify. You see there is no space on left hand side or there is no space on right hand side. It has occupied the whole thing. So we basically we prefer to go for justify because this will represent your content in a very systematic way. But in some cases, whenever you are using some tables and you want to set your text at the center, in those situations, if you want to set your values like numbers on the right hand side, you can use the properties like this, that is text aligned right, or you want to set something at the center, that is text aligned center, or you want to set it at the left, so it is text aligned left. And if there is a paragraph you want to justify to the borders of your document like this, जैसे मैंने इसको minimize करके देखा है, so you will see it is occupying the perfect space. आप उसको drag करके छोटा करो, बड़ा करो, automatically it will be justifying the content. Okay, so this is nothing but a justifier. Is it clear to you the four values left, right, center, and justify for the property called as the text align? And it is basically for the purpose of formatting your text. Yes, is it clear to everybody? Text align property with four property values. Yes, sir. And we can, okay? Yes, sir. Okay. Now the text decoration. Now this is most important because we need to use this underline because bold is there in text font weight. It is not that text weight. Text weight नहीं है यहाँ पर. Font properties में होते हैं italic and bold. Italic and bold, these two things are there present in your font property, whereas underline, overline, all these properties which are present into your text formatting property. ध्यान में रखना है, bold करना है, italic करना है, there is no text decoration center right. वैसा कुछ text properties में नहीं है, वो font properties होते हैं. और text properties में आप उसको underline, overline, stretch, line through कुछ भी ले सकते हैं. Blinking effect. अब ये blinking effect support नहीं करता, आप you can show it a blinking text also. We'll check it. Blinking effect आता है कि नहीं हमारे example के अंदर. But you can use this property that is called the text decoration properties for decorating the text, just like underline, overline, or stretching. ये जो होता है ना straight through, your underline, इसमें और एक होता है overline, line through. So we'll check it all these properties. और हमें underline नहीं चाहिए, जैसे anchor tag को underline नहीं चाहिए, उस situation में you can use this property called as a text decoration none. यानी क्या, उसको कुछ भी decorate नहीं करेगा. We'll have that example over here also. So these four properties we will be implementing over here, and I'm copying the code and pasting over here into a new assignment. So file pasting over here, and I will call it as, save it as as6.html, and you will see the first text content will be having a line through. Second property, line through. Overline will be there, underline, overline, and line through. And blinking effect, but it is not supported. Let us see whether it will be available or not. And last property I want to use, that is none. ये मैंने इसमें यूज नहीं किया, तो इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो मैं अभी इसके बाद में वाली बताऊंगा. So first we'll go for executing this content and we'll check this four properties, that is underline, overline, line through, and blink. These four properties will be checking into these assignments, and you will see like this. You will see like this. Underline will be given an underline. I'm zooming this text content so that it will be visible for you. Okay. Now I think it is visible to everybody. Okay. So underline will be giving it, that is text decoration. Underline will be giving an underline to your text content. Line through will be writing a line at the center that will be cutting the text content that will be visible for you. Then overline means what? Just like underline, it is overline. So line will be drawn at the upper part of your text content. Now you don't see the blinking effect because this effect is not supported in your Chrome. This was
some years before, whenever the people were using the browser called as a Netscape Navigator. Now, this property is only supportable on Netscape Navigator. You cannot use this property on Chrome or Mozilla and Opera. So I think this is outdated nowadays. No one have this effect because people like to create websites without effects like blinking effects or some catchy effects. तो वो इफेक्ट्स हम नहीं यूज करते आज के जमाने में, इसी वजह से ये प्रॉपर्टीज क्रोम में या फिर फायरफॉक्स में टेक ओवर करके अभी हम उसको इफेक्ट को महसूस नहीं कर सकते. बट इफ यू वांट टू चेक दिस इफेक्ट, यू हैव टू डाउनलोड द Netscape Navigator and use this property, and you see how this blinking effect will be working over there. Is it clear to you the 4 properties of text decoration: underline, overline, line through, and blink effect? Okay? Yes or no? Yes. Okay. Yes, sir. Now one more thing is that there is none property. So ये हमें ज्यादा करके anchor tag में use करते हैं. So anchor href is equal to, we'll go for http://www.ibmrd.org, और हम यहाँ पर लिखते हैं click to catch IBMRD. Okay, तो हम अभी यहाँ पर लिखते हैं कि click to catch, and I'm closing this with anchor tag. Okay, तो मेरे ख्याल से ये हमने लिखा anchor tag. I'm saving this file and I'm erasing the file. The effect will be creating automatic underline because this is an anchor tag, और इसके ऊपर हम cursor लेके जा सकते हैं. When I click on this, automatically it will be opening the websites. Okay, the corresponding website will be open because that is anchor tag and that will be hyperlinking to the websites. Okay, सबको समझ में आया ये एंकर टैग. नाउ बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमने यहाँ पर देखा सबको अंडरलाइन आ रहा है ना क्या. नाउ इन दो सिचुएशन यू डोंट वांट दिस अंडरलाइन टू बी देयर ऑन योर टेक्स्ट कंटेंट. You don't want underline to be on your text content. In those situation, you can apply a CSS like this. So मैं यहाँ पर CSS ऐड कर रहा हूँ. So style. तो मैं क्या करता हूँ अभी, ये इसको मैं ऊपर ही डिक्लेयर कर देता हूँ. So nowhere in the anchor tag. So I am writing here in a style tag. So style, and I am closing this style tag, STYLE, style tag, and I need to write a style sheet into head part. तो मैं इसको कट करता हूँ और head part में इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं बताऊंगा A, that is anchor tag. एंड इस एंकर टैग को क्या प्रॉपर्टी देने वाला, टेक्स्ट डेकोरेशन कोलन नन. एंड व्हेन आई से लाइक दिस, सो एंकर टैग जो है उसको ये जो डेकोरेट होने वाला है इसको कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा. सो आई एम सेविंग दिस एंड आई एम रनिंग दिस ऑन माय ब्राउजर एंड आई रिफ्रेश इट. द अंडरलाइन इज नाउ गॉन बट द हाइपरलिंक इज देयर. आई कैन क्लिक इट बट द अंडरलाइन इज नॉट देयर. सो प्रोबेबली इस तरीके के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या फिर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं. How to remove hyper underline from your anchor tag. So is it clear to everybody how this example, that is text decoration null, will be helping us to remove the underline that is created due to anchor tag, and this makes the output very systematic, very systematic. Yes, is it clear to everybody? Yes or no? Yes, sir. Rest? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now next property is text transform. The previously we have covered. Now see, text alignment we have covered, text decoration we have covered. Now text transform, and here you can transform the text directly. So no need for writing a specific, what you call as, copy it in a Word document and change the text content what you have written. You can transform the text like this. So here if I want to convert this into uppercase, here there is an option on Word file, that is a lowercase, uppercase. When I say lowercase, it will be converting it to lowercase. When I say uppercase, the text will be converted into uppercase. If I am saying caption each word, यानी first letter को uppercase में convert करो, that will be done. This is what we call as a captionized each word, captionize. And toggle case. So see, toggle case means what? Alternate text. That is the first character will be converted into lowercase and rest converted into uppercase. So this type of effect is there as far as the word is concerned. Now, this is possible over here in text using your property called the text transform property, and you can convert a text, whatever you have written into the paragraph, you can convert it into uppercase, you can convert it lowercase. No need for converting it by copying it in your Word document, उसको फिर change करना फिर उसको paste करना कोई जरूरत नहीं. You can use this property and you can convert it. Now there are 4 things, that is, one is none,
देयर इज नथिंग टू बी डन, जैसे आपने लिखा है उसी तरीके से वो इसको दिखाएगा. Capitalize just like here, the first character will be capital, rest all will be in lower case. Upper case is there, lower case is there, but toggling is not there here. It is in the word that is a toggle, but here you have only lower case, upper case and caption. Three things are there and one is none, yani aapko kuch effect nahi dega. In those situation you can use this none. Is it clear to you the four property values for text transformation? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, I sir. will go for example and you will see how this will be helping us to set the transformation. So I'm saving it as an assignment 8.7.html and you will see I have written some text in the paragraph and here I have used the transform property that is capitalize. So all characters will be converted into capital. Here in upper case, all character means the first character will be converted for each word. So first character that is will be capitalized. So हर एक word का पहला character को upper case में convert करेगा. When I say upper case, the all characters which are written over here will be converted to upper case and same way in lower case. And we can go for one more thing that is none. अगर मैंने none लिखा तो क्या होगा? Okay. So these are the only four properties which are available over here. I'm copying this content and I move to the first part. This is my first thing. So मैं इसको okay. So this is the first property that is text transformation value is none. Capitalize. The word is capitalize. ध्यान में रखना है capitalize upper case lower case. I'm saving this and I'm running this on a Chrome and you will find the output like the first text content that is sorry, I have okay. So जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था none will be printing, जैसे हमने उसके अंदर लिखा था उसी तरीके से उसको वो प्रेजेंट करेगा. जैसे हमने यहाँ पर लिखा उसी तरीके से उसने रिप्रेजेंट किया. Now the capitalize will be converting the first character of each word into uppercase. See that this W, B and capitalized is using the converting the text content of, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है this is L, this is nothing. तो फर्स्ट कैरेक्टर को इसने कन्वर्ट कर दिया अपर केस में. अपर केस विल बी कन्वर्टिंग ऑल टेक्स्ट कंटेंट इनटू अपर केस जस्ट लाइक हमने ये टेक्स्ट इसके अंदर लिखा था एंड हियर इट इज कन्वर्टिंग द टेक्स्ट इनटू अपर केस एंड सेम वे लोअर केस दो दिस इज T is written in upper case, still it is converted into lower case. That's it. So this is nothing but a text transform. You are transforming the text into capitalize, into uppercase, into lowercase. This is the property you can use for transforming the text written into paragraph or any other tag. Is it clear to you? Yes or no? Is it clear to everybody? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now only two properties are remaining. Only two properties are remaining. One is white space. This is new been added into this property set. And there are three values, that is normal, pre, and now no wrap. No wrap. Normal, pre, and no wrap. Now what is exactly the meaning of pre? जैसे आपने लिखा है उसी तरीके से वो दिखाएगा. So we'll go for writing this code and we'll check this three property in how it will be looking into your assignment. So file new and I'm pasting over here as assignment 8.html और हमें ये तीनों प्रॉपर्टीज को उसके अंदर यूज करना है. One is pre, second one is your no wrap. तो मैं यहाँ पर जाके उसको नो रैप करता हूँ एंड थर्ड वन इज नन. तो आई एम मैक्सिमाइजिंग द स्क्रीन. वही टेक्स्ट कंटेंट को हम तीन अलग अलग तरीके से देखेंगे. सो दिस इज नन NON नन. ओके. सो वाइट स्पेस नन, वाइट स्पेस विथ प्री एंड वाइट स्पेस विथ नो रैप. ओके. सो आई एम गिविंग सम स्पेस. Here also I'm writing something over here and I'm saving it and I'm running this on a Chrome. So pre जैसे आपने लिखा है उसी तरीके से वो आपको दिखाएगा. ओके. जैसे मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, एक लाइन को एंटर कर दिया एंड आई रिफ्रेश इट
सॉरी, इसको मैंने सेव करना है। देखो मैंने यहाँ पर एक एंटर मारा, यहाँ पर भी एक एंटर मारा, तो प्री में है जैसा है, जैसे मैंने टाइप किया है और मैं उसी तरीके से प्री विल बी डिस्प्लेइंग इट, प्री विल बी डिस्प्लेइंग, सी द प्री, आप जिस तरीके से लिखेंगे उसी तरीके से वो वहां पर करेगा। नाउ नो रैप, नो रैप, देखो अभी मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, ये आगे का कंटेंट मेरा गायब हो गया, ये आगे का कंटेंट गायब हो गया। जैसे ऊपर के इसमें नन बोला, यानी क्या, जैसे मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ मेरी विंडो को, तो वो देखो ऑक्यूपाई कर रहा, देखो फर्स्ट में सब कंटेंट आ चुका है, फर्स्ट लाइन में आ चुका है, जैसे मैंने इसको ड्रैग कर दिया, और जैसे जैसे मैं उसको स्लो कर रहा हूँ तो वो कंटेंट नेक्स्ट लाइन को कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स व्हाट, इट इज रैपिंग, इट इज रैपिंग, सी दिस, द टेक्स्ट कंटेंट इज रैपिंग, देखो देखो कैसे रैप होते जा रहा है, यानी जैसे उसको स्पेस मिल रहा है वो नेक्स्ट लाइन को तरफ कम स्पेस हो रहा है तो वो रैप होके नेक्स्ट लाइन को आ रहा है। बट नो रैपिंग इन दिस पार्ट, the text content which is there, the cursor is, you need to use the cursor for catching those text content, okay, and when you go say pre means जैसे आपने लिखा है, जहां पर आपने एंटर मार के टेक्स्ट को लिखा है उसी तरीके से न्यू स्पेस विल बी ऑक्युपाइड, न्यू लाइन विल बी ऑक्युपाइड, जैसे कुछ भी करो आप, यहाँ पर कुछ स्पेस करो, सेव करो एंड रिफ्रेश करो, स्पेस विल बी ऑक्युपाइड। सो आप प्री में स्पेस को एनबीएसपी देने की जरूरत है, मैंने नेक्स्ट एंटर मार दिया और कुछ टेक्स्ट लिखा और कुछ स्पेस डाले, देयर इज नो नीड फॉर मी टू राइट एनबीएसपी, एनबीएसपी लिखने की जरूरत नहीं, सेव कर दिया, यहाँ पर आएगा देखो ऑटोमेटिक स्पेस विल बी ऑक्युपाइड। सो प्री white space with the value called as a pre will be accepting the spaces directly, no need of writing any ampersand nbsp, कुछ जरूरत नहीं, और जहां पर आपने एंटर मार दिया वहां पर वो एंटर कंसिडर करेगा, ओके। सो जैसे आप लिखेंगे दैट विल बी प्री डिफाइंड, जैसे प्री कंपाइल को उसको डायरेक्टली उस तरीके से दिखा देगा, सो दैट इज नथिंग बट अ प्री। No wrap will not wrap a text content. Due to this, the cursor will be there. That is, a bottom scroll bar will be available for you to scroll the content. And when you say none, white space none, this means you can allow the wrapping over here. So the wrapping will be allowed. Okay, is it clear to everybody? White spaces? Yes or no? The pre value, the no wrap value, and none. Normal. That is normal. Sorry. We call it as normal. So by default, it is none or normal. So no effect. The effect will be set. No problem. Is it clear to you? The normal, pre, and no wrap values for white space property of text format. Yes or no? Yes or no? सर प्री मध्ये आपण जसं टाकू तसंच डिस्प्ले होतंय का? येस येस येस, आता मी इथं काहीतरी टाकतो आणखी ना, तसं तर मी एंटर मारली, एक एंटर, दोन एंटर, तीन एंटर, आणि ते मी टाकतो हाऊ आर यू, I am using some characters like this, I am using some numbers like this, text like this, I am using some numbers like this, और मैंने सिर्फ जैसा टाइप किया वैसा डाल दिया, और मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन को अगर टैब दिया, बहुत सारे टैब दिए, और यहाँ पर मैंने कुछ भी और एक नंबर को टाइप कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, ओके, आई हैव रिटन समथिंग, और मैंने इसको सेव कर, देखो मैंने यहाँ पर देखो जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से जब मैं एग्जीक्यूट करने के लिए जाऊंगा, सी दिस, आई एम मैक्सिमाइजिंग इज, और मैं अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज, जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से आउटपुट दिखा। तो 2 बार एंटर हमने डाला था, कुछ कैरेक्टर्स हमने लिखे थे, फिर हमने टैब दिया था, टैब के बाद हमने कुछ टेक्स्ट कंटेंट लिखा था, जैसे हमने यहाँ पर दिया है उसी तरीके से आपको ये आउटपुट दिखाई देगा। दिस इज नथिंग बट अ प्री, white space pre, okay। One more thing I want to show you, there is one more tag called the pre tag, यानी आपको ये प्रॉपर्टी नहीं यूज करना तो यू कैन यूज दिस टैग कॉल्ड एज अ प्री टैग, PRE, ओके। और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था उसी को मैं ही कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये भी उसी तरीके से आउटपुट आएगा। तो जस्ट आई रिफ्रेश इट, ये भी उस तरीके से दिखाएगा, इसने भी वही उसी तरीके से, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रॉपर्टी सेट कर प्री वाला प्री डिफाइंड है, तो इसका फॉन्ट थोड़ा अलग दिखाई देगा, बिकॉज इट इज कैचिंग समथिंग फॉन्ट फ्रॉम योर ब्राउजर, ओके।
बट टेक्स्ट का रिप्रेजेंटेशन उसी तरीके से रहेंगे, जैसे आपने कुछ स्पेस यहाँ पर दिया था वही स्पेस यहाँ पर आ जाएगा, वही दो सेमी एंटर किए थे हमने, यहाँ पर कुछ टैब्स हमने यूज किए थे, सेम वे द टैब्स विल बी देयर। तो प्री इज यूज फॉर, जैसे आप लिखते हैं उसी तरीके से आपको आउटपुट में दिखाता है, दैट इज नथिंग बट अ प्री। यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड एज अ वाइट स्पेस प्री, और यू कैन यूज दिस व्हाट यू कॉल्ड एज टैग कॉल्ड एज अ प्री टैग, आइदर और। बट प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना, प्रॉपर्टीज आर मोर प्रेफरेबल rather than using this tag। समझ में आया सबको? प्री टैग, yes or no? यस सर। Okay, now most important last thing that is added into CSS3, ये नई प्रॉपर्टी CSS3 में है, that is text shadow। जरा shadow, so मुझे अभी इस टेक्स्ट कंटेंट को शैडो इफेक्ट देना, आई एम पुटिंग ऑन शैडो एंड सी, जूम करता हूँ ये टेक्स्ट कंटेंट को, देखो यहाँ पर कुछ शैडो इफेक्ट आ रहा है, इसको नहीं था शैडो बट इसको शैडो इफेक्ट आ रहा है, अभी इसको शैडो इफेक्ट देना है, आई एम क्लिकिंग इट, आई एम मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज एंड सेटिंग इट एज शैडो एंड ओके। तो थोड़ा सा शैडो इफेक्ट आ रहा है। नाउ दिस इफेक्ट आई वांट टू हैव इन माय टेक्स्ट डेकोरेशन, दैट इज इन योर टेक्स्ट कंटेंट, जो आप पैराग्राफ लिखेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर उसके अंदर चाहिए, तो आई कैन यूज दिस वन एंड आई एम पेस्टिंग ओवर हियर इन अ फाइल न्यू एंड आई एम सेइंग पेस्ट ओवर हियर, saving it as an assignment 9.html, and that's it. Okay, now text shadow, and here you can give 4 parameters, so you can give the color also, you can set the left from where the shadow should start, so 4 parameters can be given. First parameter, from where to start, width, height should be how much of that shadow, how long it should replicate its shadow, and what color should be there for a shadow. So everything you can set it into the property called as a text shadow, and I run this on a Chrome, and you'll find this effect will be helping us to give the shadow effect for your text content like this. So I have made it on your browser in a more zoomed way. Okay. If I don't use this property, I just give 8 pixels, nothing will happen. 4 parameters are required, that I will set it as 8px. Again, I have used, and see this blue color will be setting us, and again 8px. ब्लर इफेक्ट, यानी देखो अगर हमने ऐसा कुछ लिख दिया, यानी जैसे मैंने ये एग्जांपल में बोल दिया कि मैंने 2 बार लिख दिया, यानी जो आपका फॉन्ट है उसी का ही टेक्स्ट कंटेंट आ रहा है नीचे, देखो यह जो हमने ऊपर लिखा था उसी का ही शैडो आ चुका है, बट शैडो इज इन डार्क कलर, शैडो इज डार्क कलर। So for making it more what you call as dull, you have to set something like this. You can put some values like this, and you can see the dullness is removing. Okay. So this is nothing but your shadow effect, and the 4 parameters need to be provided, and you have to keep in mind. So this may not be supported by all the browser. You keep in mind it is supported on Chrome, but you don't expect that this type of effect will be supported on other type of browser like Opera or Internet Explorer. It is supported on Chrome. That's why we have seen this output on a screen. Otherwise, it is not visible on all the browsers. And people don't use this type of effect for giving some shadows. Is it clear to everybody the content what we have covered in today's session? I think we have covered with all the things as far as the font and text properties are concerned. Yes. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Okay. Sir. Now we'll move for the another point. Overview में लेता हूँ for 5 minutes, and we'll wind up for the today's session. Now, what we need to cover in the upcoming session, that is from tomorrow's onwards, तो वो पता होना बहुत जरूरी है. So I'll move for the text content, syllabus, and syllabus में देखेंगे कि क्या क्या हमें करना था और क्या क्या हम कर रहे हैं. So HTML5, CSS, AIT nodes, CSS3, and now we have covered with this property. So color, background property, color properties, and masking, the 3 things are still remaining as far the chapter is concerned. Only 3 things are remaining. Rest we have covered. Let us see the syllabus also. क्या हम सही तरीके से जा रहे हैं क्या नहीं.
So I'm moving to page number 50 of your syllabus. So that is AIT. And I think we have covered this chapter one. So I will not talk about this. But as far as chapter two is concerned, we have covered the architecture, model, frameworks, effect, gradients, and bootstrap. You have to do from your side. From my side, this is only remaining, that is color, background, image, and masks. Okay. And just after we will be winding up with the chapter number two. Then after that, we'll be entering into Node. And I think the PHP is more bigger chapter, so मुझे focus उसके ऊपर भी करना पड़ेगा. So parallelly we'll do two things, that is Angular JS also, and we'll start with PHP also. So ये भी बहुत important chapter है. Basic questions will more be asked on this PHP. So as far as examination is concerned, तो मुझे PHP की तरफ ज़्यादा focus करना पड़ेगा. And parallel these technologies will be covered with some videos shared with you. So you will also catch all the things. But हमें ये syllabus थोड़ा fast में cover करना पड़ेगा. Now we'll move towards the color properties and background properties of images. So we'll start for the today's session. Just for a simple, what do you call as a touch to the concept of the color properties in CSS. And you will see CSS support 140 plus color names. जो मैंने उस दिन बोला था कि आप सर बोलते हैं RGB कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, येलो, रेड, ये सब कलर्स, कितने कलर्स के नाम हम दे सकते हैं. सो प्री डिफाइंड देयर आर 140 प्लस कलर्स, 140 प्लस कलर. तो उसे एग्जांपल जैसे मैं बोला हमने यहाँ पर ऑरेंज और योर डॉडजर ब्लू, योर मीडियम सी ग्रीन, ग्रे, स्लेट ब्लू, वायलेट, ये कुछ नाम आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. This type of names are there. 140 plus names are there. 140 plus names are there. And there is one more format, that is hexadecimal format. We have already seen in a color property that we are giving hexadecimal numbers. Hexadecimal numbers are always, मैंने कहा पर example के लिए, but I will show you how from where we can get these hexadecimal numbers. And there is one more thing, that is RGB value, that is red, green, and blue values you can set. बट ये तीन से कुछ काम नहीं होगा, हमें कुछ और चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी. दैट इज नथिंग बट RGBA. This A has been added into RGB. What is exactly that thing that we need to cover in the upcoming session? Then there is what is HSL. You can give a color in the format of HSL also. You can give a color into HSLA. Again, one more thing, that is A is been added. So in all, as color properties are concerned, you can give a color with a name also. You can give the color name with hexadecimal also. You can give a name with RGB also, with RGBA also, with HSL, and with HSLA also. So in all, 1, 2, 3, 4, 5, and 6 type values can be assigned to a color. Okay. And you can set, additionally, you can set some opacity also. Maybe बैक उसका जो कलर की कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड भी कर सकते हैं. दैट इज नथिंग बट ओपेसिटी. of example on opacity, and we'll be covering this all 6 types of effects of colors in upcoming session. Okay, now in today's session we'll start with a color with name, and we can check how this color name can be given to the property called as a color. So I am using the background color property. This is property of a background. So हमने अभी तक इसको टच नहीं किया background properties को, but we will be covering it in upcoming sessions. But here I will need to focus on tomato color or orange color or your gray color or slate blue, violet, light blue. इस तरीके के कलर को हम किस तरीके से टच कर सकते हैं. So I'm copying this one and moving towards this file new. Sorry, file new. And seeing it assign as so HTML5. I'm creating new folder and giving it name as color. So color, and this is my AS1. So HTML5 colors and A. 1 second.
PC is getting hang nowadays. Let us save again. Control S, HTML, colors. Let us save color. Hey, 1 second. Save AS1. I will save it into HTML, new folder, color demo, and it's not accepting. क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें? चलो कहाँ पर तो अलग तरह की जगह पर सेव कर दो. So text, so color color1.html. Okay. So we'll see the output. We have used this background color and हमारा intention इस example में कि क्या हम ये color के नाम देके color दे सकते हैं क्या? So I'm running it and you'll see the name can help us to give the color. There are 140 plus colors, so you can use this just like tomato, orange, gray color or violet color. You can use any name of a color and you can get an output in those ways. Same way, we can set a color with what you call as a ये example हम लेंगे. So we'll set a color that is a background color just like this. How this will be helping us to give effect to your assignment. So Control V, I'm saving it as color 2.html, and how this background color will be, that is color effect will be giving, can be applied to different properties of your style with different elements. Let's say paragraph, H1, H2 tag. तो हम ये background color देके कैसे हमारा output को अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं. So that is some example here like this. You can give a color like background to your individual elements. जैसे Pete को H1 को आपने background color दिया है, इस तरीके से भी कुछ हम output देख सकते हैं. Then text के color को भी हम दे सकते हैं, जैसे हमने पहले वाले example में background को color दिया था. Now in next example we'll give a color to the text content which is written over there. Okay, so assignments, file, new and paste, and Control S, color 3.html. So color in the sense is not just for giving a background, but you can set a colors to a text also. So ये एक example था जहाँ पर हमने color दिया था background को, उसी तरीके से हम कुछ color दे सकते हैं text को भी. So properties, color plays very important role. Color plays very important role as far as the what you call as properties are concerned. So here we have given a color to the text also, we have given a color to the background also, and we can give a color to the border also. We can give a color to the border. तो ये एक examples में दिखाना चाहता हूँ, and हम color को कहाँ पर use कर सकते हैं, ये बहुत important चीज है. तो Control S, and that is color 4.html. So I have given color to the background also, to text also, and now I am giving a color to the borders also. So this will be helping us to represent your data in a very systematic and very what you call as a look and feel हम अच्छा बना सकते हैं, just like this. Okay. So here we have used the property called as a border property, और हमने यहाँ पर वो color use किया है, there is tomato color or your violet color. Okay, so you can use this color anywhere with the back properties, with the text properties, with the font properties, and with the border properties also. तो ये color हम बहुत जगह पर use करने वाले हैं आगे जाके कुछ examples के अंदर. And before moving towards the session, I need to start with the concept called as RGB, hexadecimal, HSL, RGBA. That is A, what is exactly, and what is HSL, which is there was present. Here we have added this A to that HSL. How this will be giving a color. So in previous session, we have used the direct names
Now we will be using the RGB values, we will be using the hexadecimal values, and we will be using the HSL values. So three things are being added into your new, what do you call, the set of values for your color. And we can use this RGB, the that is A is been added to these two things. That is HSL को उन्होंने A लगा दिया, it has become HSLA, and RGB को A लगा दिया, it has become RGBA. So in all, 3 plus 2, 5 values we can use rather than using this name. ये नाम का बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होता है इसमें, इससे अच्छा होता है कि हम ये 3 और ये 2 नए जो चीजें उन्होंने ऐड किए, ये 5 तरीके से हम कुछ वैल्यूज दे सकते हैं. And one example I want to demonstrate, and we'll wind up with today's session. So I'm saving it with file new and saving it as an it is color 4.html, and see the background color I have used here. It is RGB, that is a red, green and blue combination. Here I have used some hexadecimal values. Here I have used that HSL, और HSL में हमने प्रॉपर्टीज यूज किया, कुछ ऐसा दिया है 3 पैरामीटर्स, व्हाट इज 9, व्हाट इज 100 एंड व्हाट इज 45. विल गो इनटू डिटेल इन अपकमिंग सेशंस. और हम ये भी देखेंगे RGBA, यानी ये RGB को A लगाने के बाद एक चौथा पैरामीटर आता है, व्हाट इज दैट. एंड सेम HSL में 3 पैरामीटर है, अगर हमने इसमें 4th पैरामीटर लगा दिया, दैट इज HSLA, तो हमें ये 4th पैरामीटर देने के बाद क्या इफेक्ट आता है हमारे आउटपुट के अंदर. ओके, विल गो फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस फाइल and we'll see how this RGB, then your hexadecimal, then your HSL, ये तीनों का देखो कलर सेम ही है, बट RGB से दे सकते, then your hexadecimal से दे सकते, HSL से आप दे सकते, और वही कलर आप RGBA से the 4th पैरामीटर देने के बाद क्या होता है. 0.5 means what? 0.5 means what in HSLA, in RGBA, that we will be catching in the upcoming session that is been scheduled in tomorrow. Till then, इतना ही हमें ध्यान में रखना है कि हमें ये 3 और ये 2, in all 5 अलग तरीके से हम कलर्स दे सकते हैं. Any doubt for today's session? Anyone want to share something? Yes, I will take your attendance, and if you have any doubt, you can speak to me now immediately. Yes, any doubt, any questions? Yes, Ashwini का problem, Rohan? नहीं सर. Yes, सबको समझ में आया? Yes sir. Yes sir. ओके. ये प्रॉपर्टीज खत्म होने के बाद हमें जर्नल के लिए असाइनमेंट्स लिखना चालू करेंगे. जर्नल की असाइनमेंट्स हम इसके बाद चालू करेंगे. अब तक मैंने जर्नल के लिए कोई असाइनमेंट ये चैप्टर नंबर 2 पे दी नहीं है. ये असाइनमेंट्स हम ये खत्म होने के बाद 5 to 6 असाइनमेंट्स विल बी देयर ओनली ऑन CSS. ओके, पर आपको तब तक सब प्रॉपर्टीज को लिख के रखना है और सब प्रॉपर्टीज के वैल्यूज को भी लिखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बोल दिया है, यदि आप किस तरीके से प्रॉपर्टी दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये वाला इसमें कि जैसे हमारा बैकग्राउंड कलर, तो किस तरीके से हम उसको क्या क्या दे सकते हैं. सो आई वांट टू नो दैट हैव यू रिटन दैट असाइनमेंट जो मैंने लास्ट वीक में दी थी एज एन होमवर्क टू एवरीबॉडी.